India. This is 7th session. All right. We are proceeding towards the concluding part of the chapter, the last concept of the chapter, right? Chapter 7, coordinate geometry. First formula that we derived was distance formula. And from that distance formula, we got one deduced result to find distance of any point from the origin. The second formula that we established was section formula. And of course, we got one more deduced result from it. The midpoint formula. That is the formula to find the coordinates of midpoints of line segment joining two distinct points. Alright. Today we are going to derive the last concept of this chapter for standard 10. Okay? क्योंकि coordinate geometry तो आगे चलता रहेगा. In 11th also, if you take maths, you will learn coordinate geometry. We are moving or heading towards the concluding concept of the chapter, and that is area formula. Area formula. और किसकी area? Triangle की. Area of triangle. Alright? Surprisingly, this is going to be the third formula to find area of triangle. The very first formula that you learned was area of triangle is half into base into say loudly so that you can be heard. Half into base into अरे भाई corresponding altitude, क्योंकि ट्राइंगल के 3 अल्टीट्यूड होते हैं, तो the altitude which is dropped on that particular base which you are taking in the formula. All right, half into base into corresponding height या altitude, anything can be said. Is that clear? So that was the first formula that you learned. The next formula you learned was क्या बात है, ऑनलाइन पढ़ाई की थी यार. ये हेरोन्स फॉर्मूला ऑनलाइन में आया था. हेरोन्स फॉर्मूला. ओके, व्हेन डू यू यूज हेरोन्स फॉर्मूला? When the length measures of all 3 sides of triangle are known. And when do you use the first formula? When you know one of the base or one of the sides and the altitude corresponding to that side. You understand? So if you have altitude and corresponding base, base and corresponding altitude, you can use the first formula. If you have measures of all 3 sides, you can use the second formula, Heron's formula. So depending upon the situation, you can pick up the formula to find area of triangle. Now what should be the condition? कौन सी situation में आप ये जो formula derive करने वाले हैं वो use करेंगे? When you are given coordinates. When you are given coordinates of those 3 points forming triangle. Where are those 3 points to have coordinates? In Cartesian coordinate. In the 3 vertices of triangle, if they are the points of Cartesian coordinate plane, then to find its area we can use area formula. So what is area formula? Let's derive. Here, I've shown 3 points A, B and C. Okay? I've shown 3 points A, B and C. I have to find area of this triangle. Don't laugh, huh? So here I joined A, B and C by means of line segment. So one triangle is formed. अब ये जो triangle form होता है ना, it can be either right angle triangle or it may not be a right angle triangle. That's why मैंने 2 figure draw करके रखा है. In this case, purposely I have taken a right angle triangle. अच्छा, हमें पता है कि coordinate plane में whenever we have to find the distance, if it is horizontal line segment या vertical line segment, it is very convenient to find its distance.
straight away difference between the coordinates, either y if it is horizontal, difference between x coordinate, if it is vertical, difference between y coordinate. Of course, the difference that we are talking about are always positive distance, okay, because the distance can never be negative. All right, children, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल लगता है, ओके, खेल खत्म ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC here is half into the product of two sides forming right angle. One side is what? BC. The other side is what? AC. आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक ही आएगा, देखो कि दोनों का A और C का एक ही आएगा, यहां B और C का एक ही आएगा y एक्सिस पे। आर यू गेटिंग मी? सो हियर द x कोऑर्डिनेट इज xy, इसलिए मैंने x1 लिखा है। ऑलराइट, हियर द y कोऑर्डिनेट इज सॉरी x कोऑर्डिनेट चाहिए x2, बोलिए y कोऑर्डिनेट y2, it's same for C and B, y2, and y coordinate here is y1. So that is half into base BC. BC is equal to, let me say this point is P and this point is Q. BC equal to PQ. Correct? Now PQ will be what? XY minus बड़ा X1 है ना और छोटा X2 है. So X1 minus X2 into AC. That is vertical. So difference of y coordinate. Now AC is equal to, if I say this is R and this is S, so AC is equal to RS. Yeah, AC is vertical. So straight away y1 minus y2. Difference of y coordinate. y1 minus y2. ये हो गई आपकी formula to find area of right triangle. But we shall not use this formula to find area of right angle triangle. क्यों भैया हम वो ढूंढेंगे? ये डिस्टेंस सीधा डिस्टेंस ढूंढ लेंगे। We'll just find out the distance. y1 minus y2 and this will be x1 minus x2. So no need to remember this formula. No need to remember this formula. Is that clear? But if right angle triangle is there, the formula is simple. Half into BC into AC. Half into the product of two sides forming और ये हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। सर लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा हुआ तो ये रहा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है, तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं कर सकते। सर ये साइड ढूंढ लेते हैं, ये साइड ढूंढ लेते, हाँ ढूंढ लो, that's it. That's it. Say suppose this is ABC. You know AB is perpendicular to BC. Then area of this triangle is half into base into y. So there is no need to use any other formula. All right? क्योंकि बाबा this is x1 y1. This will be x2 y2. This will be x3 y3. Right now you don't know what are x1, y1, x2, y2, x3, y3. But in the sum, those values would be given. So you can easily find out AB by using distance formula. यहाँ distance formula भी यूज करने की जरूरत नहीं है जब वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो। अब ये जो AB ढूंढना है वो तो ऑब्लिक है, स्लैंटिंग है, BC ढूंढना है, that is also slanting. So you can use and find out and then find area of triangle ABC because it is a right angle triangle. लेकिन यहाँ जो बेस और अल्टीट्यूड है, बेस इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड अल्टीट्यूड इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, सीधा ढूंढ सकते हैं। चलिए, if it is neither of them, like a right angle triangle be nothing, as you can see in the last one. हंसना मना है। AB BC AC. All right.
ओके, I'll just remove this part now, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन आने वाला है। ये पता नहीं है राइट एंगल दिखता है राइट एंगल जैसा, ओके, इट्स राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिखता है, बट इट्स वी डोंट नो until it is told to you. Fine. So what to do? ये तो हॉरिजॉन्टल लगता है ना, ये तो हॉरिजॉन्टल लगता है, ये भी हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, ये भी हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। So I'll say point C is here, यहां नहीं, C उधर है, तो इस प्रकार से ट्राइंगल Children, if it is horizontal, then y coordinate would be same. अभी y1, y2 अलग है और y3 अलग है. y3 would be somewhere here and y1 would be, y2 would be here. Are you getting me? वो horizontal हो गया तो y coordinate सेम रहेगा दोनों पॉइंट का, b और c का. ओके, अब कोई भी सेगमेंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, लेकिन we are always interested in horizontal or vertical segments, okay, in Cartesian coordinate plane. So what I do, from all 3 points I'm going to drop perpendicular to x axis as well as y axis. Now perpendicular C से ड्रॉ किया, A से ड्रॉ किया, B से ड्रॉ किया. Let me say this point is P, Q and R. So what will be the coordinates of P? X coordinate definitely x2 and y coordinate is going to be 0 because the point is on x axis. जल्दी से बता दीजिए Q x1 0 and R x3 0. x3 0. Yeah, I wanted these 2 points coordinates y are sorry coordinates of point B and say different. That's why मैंने horizontal नहीं लिया. Now I'll drop on y axis. थोड़ी सी टेढ़ी लाइन चलेगी और अब यहां से मुझे ड्रॉ ये थोड़ी लाइन ऊपर होनी चाहिए, राइट, तो अच्छा दिखेगा. PQR बोला, इसको मैं बोलता हूं M, N और L. The point is on y axis. These points are on y axis, so they are x coordinate 0. What will be y coordinate? y1. X coordinate? y3. Sorry, y coordinate only, and y coordinate? y2. Got that? My target is to find area of triangle ABC. It's going to be slightly difficult to understand this. बहुत सारे closed figures है, so I can say there are many polygons, and combination of these polygons I'm going to use to find area of triangle ABC. Area of one polygon plus area of other polygon minus area of another polygon. And these polygons are एक ट्राइंगल है, फिर ट्रेपेजियम है, AQPB एक ट्रेपेजियम दिखता है ना, AQRC ट्रेपेजियम, ABC ट्राइंगल, AMNC ट्रेपेजियम, NLBC ट्रेपेजियम, PBLO ये तो वही रहता है, रेक्टेंगल है ना, ये परपेंडिकुलर्स है ना सब, ये परपेंडिकुलर्स है, these are all perpendiculars. So trapezium मतलब ये पैरेलल, जो भी परपेंडिकुलर्स है पैरेलल, so one pair of opposite side ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये भी एक ट्रेपेजियम है, PRCB. ऑलराइट, मैं सीधा ही बता देता हूं आपको. ऑलराइट, I'm just putting line to show area of one polygon. वो polygon क्या है आप मुझे बताइए.
this is one polygon. I'm going to pick up area of this polygon. Which polygon is that? बोलो A B PQ. और वो कौन सा है पॉलीगॉन? ट्रेपेजियम, क्योंकि PB is parallel to AQ. So area of that trapezium. Alright? There I am going to pick up this area. आप बता सकते हो वो कौन सा पॉलीगॉन है? वो भी तो ट्रेपेजियम ही है. वो भी ट्रेपेजियम ही है. Are you getting me? That is also trapezium. और क्योंकि ये दो साइड्स पैरेलल है. Is that clear? If I add area of green line trapezium and red line trapezium, I am going to get one polygon which is having 5 sides: AB, PB, PR directly, RC and AC. It's a closed figure formed by 5 lines here, which we call it as pentagon. So area of green line trapezium plus area of red line trapezium is going to give me area of pentagon. If I merge these two areas, it will be area of pentagon. और वहां से मैं कुछ निकालने वाला हूं. ये एरिया निकालने वाला हूं. किसकी एरिया में निकाल रहा हूं? BCRP. किसकी एरिया में निकाल रहा हूं? P, okay. BCRP या PRCB. What polygon is that? Again trapezium. PB is parallel to RC. मैंने पहले ग्रीन लाइन ट्रेपेजियम और रेड लाइन ट्रेपेजियम का मर्ज किया तो पेंटागन का एरिया मिला. उस पेंटागन का एरिया में से मैंने ये ट्रेपेजियम निकाल दिया. किसका एरिया बच गया? Did you get that? Yes, sir. Did you get that? Yes. So area of triangle ABC is area of trapezium AQPB plus area of trapezium AQRC minus area of trapezium PRCB. Green line merge to red line plus किया और blue line उसमें से minus किया. That gives us area of triangle ABC. Did you get that? Yes, so sir. see what I'm writing. Area of triangle ABC is equal to area of trapezium. कौन सा trapezium? AQPB, right? AQPB plus उसमें मैंने ऐड किया था area of another trapezium. कौन सा? AQRC. AQRC माइनस एक ट्रेपेजियम का एरिया मैंने माइनस किया PRCB. All right. Now before we move ahead, all right, we'll have to recall one result of standard 9. ये रहा आपका ट्रेपेजियम ABCD, where AB is parallel to C. AB is parallel to C. Do you remember the formula? What is the area of trapezium ABCD? किसी को याद है? नहीं? Half into altitude into sum of parallel sides. Half into altitude into sum of parallel sides. Half into altitude तो है ही नहीं. So I have to drop dm. So that is altitude dm into sum of parallel sides AB plus C. AB plus that altitude is the distance perpendicular distance between the two parallel sides. But if your trapezium is somewhat like this, AB C, ये perpendicular already है तो BC आपका altitude हो गया. So what is area in this case? Area of ABCD is equal to half into altitude. आपको क्या ये perpendicular आप draw करेंगे तो वही distance मिलने वाला है. So that is BC into sum of parallel sides AB plus C. So हमारे जो भी ट्रेपेजियम है सारे के सारे ऐसे मतलब
Altitude is already there. Okay, so let's see that now. बोलिए, area of trapezium half into, we are talking about trapezium AQPB, correct? Half into altitude will be PQ, क्योंकि ये perpendicular है, PQ is perpendicular to this parallel sides, so half into PQ, that is altitude, into sum of पैरेलल साइड्स. कौन से पैरेलल साइड्स है? PB और QA. PB एंड QA और एक Q यू कैन राइट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. प्लस फॉर्मूला का हाफ इनटू अल्टीट्यूड. नाउ दिस इज APRC. What is the perpendicular distance? So altitude is QR into sum of parallel sides. Very good. AQ plus CR. All right. Plus, not plus, it's minus half the area of trapezium PRCB. PR will be the altitude into sum of the parallel sides. कौन सी साइड्स पैरेलल है वहां? PB and RC. Is that clear? Children, हमने क्या इंटरेस्टिंग थिंग यहां बना दिया, ये आपको पता है? We worked out this amazingly by discovering that area of triangle ABC is sum of area of two trapeziums minus the area of third trapezium. ये जो सारी सेगमेंट्स आपको दिखाई देती है ना, either that is horizontal or vertical. So उसका डिस्टेंस ढूंढना बहुत आसान. आप देखो PQ, ये रहा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मीन्स डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, x1 माइनस x2. समझ में आई क्या बात? ऑलराइट, x1 माइनस x2. अब ये लार्ज ब्रैकेट में रहेगा प्लस PB. लुक एट PB, इट्स वर्टिकल, सो पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट. लास्ट बेंच, दैट गर्ल इज नॉट अटेंटिव एट ऑल. बेटा यहां ध्यान आप, आई एम टॉकिंग अबाउट यू. PB is vertical, y coordinate y2 minus 0. So that is y2. That is y2. QA, that is also vertical, y1 minus 0. That is y1 plus half into QR. It's horizontal. So difference between x coordinate x3 minus x1. If you want positive big minus small करना पड़ेगा. So x3 minus x1 into what is that? AQ vertical है, y1 minus 0, that is plus CR, it's vertical, y3 minus 0, y3 minus half into PR, that is horizontal, x3 minus x2 into PB, ये वर्टिकल है, y2 minus 0, so y2 plus RC, y3 minus 0, that is y. Alright, children, now what is going to be my next step? पहले तो हाफ कॉमन निकाल दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट में x1, actually I am distributing this square bracket with x1 and x2. So x1 into that square bracket में अभी small bracket में convert कर देता हूँ, y2 plus y1. Okay?
फिर -x2 into that square bracket y2 plus simply I will use distributive law. उसी तरह हाफ तो कॉमन में चला गया. Now this I am going to distribute with x3 plus ही है plus x3 into y1 plus y3. All right. फिर it's minus sign minus x1 into y1 plus y3. All right. Minus sign is there, be careful. और ये हाफ तो कॉमन में चला गया. x3 becomes minus x3 into that bracket. वो तो ब्रैकेट में है, सेम साइन रहेगा. And this minus becomes plus x2 into that bracket y2 plus y3. लेकिन ये सारी चीज के बाहर हमने हाफ बार निकाला था, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट विल गेट ओवर. अब थोड़ा सा काम है. यू कैन सी x1 और x1 रिपीट हो रहा है. Actually, there are 1, 2, 3, 4, 5, and 6 terms. From there, I am picking up first term and fourth term because x1 is common there. So half as it is, square bracket as it is, and from first and fourth term, I am taking x1 common. So in the bracket, ये तो सेम रहेगा. y2 plus y1. ये माइनस, so both the terms will change their sign. दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव. बोलिए ठीक है. Then x2 और x2 वो भी दो टर्म है, लेकिन I am going to pick up positive term first. So plus x2. So in the bracket I write this terms first. बोलिए y2 plus y3. और माइनस वाला ये साइंस विल चेंज. minus y2 minus y1. And finally we have x3 and x3. ये पॉजिटिव टर्म है. पॉजिटिव टर्म पहले लिखता हूं और ब्रैकेट में बोलो y1 plus y3 और ये माइनस y2 minus y. All right, and then your large bracket. Let me close it with red pen. All right. हर एक ब्रैकेट में देखो कुछ तो हो रहा है. प्लस y1 minus y1 प्लस y2 minus y2 और प्लस y3 minus y3. So you are left with half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. That last bracket over. Now you should know all these three coordinates. I mean तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स. इट कैन बी बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव. वन ऑफ द पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. एक्स कैन बी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट कैन बी पॉजिटिव, क्योंकि वही तो है, सब कोऑर्डिनेट्स है. x1 x2 x3 y1 y2 y3. सो दे कैन बी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं ना. सो अल्टीमेटली ये पूरा जो ब्रैकेट में कैलकुलेशन है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है. बट व्हाट वी आर फाइंडिंग इज area. What we are finding is area. Area cannot be negative. So what mathematician did? They removed that square bracket. Square bracket निकाल दिया और उसका absolute value ले लिया, modulus value, which always gives you positive answer. यहाँ -25 आंसर आया तो भी मॉड्यूलस के बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा. So वो स्क्वायर ब्रैकेट निकाल दी. x1 into हे चिल्ड्रन, अब इसको याद रखने की तरीका बहुत आसान सा. x1 plus x2 plus x3 है ना. बोलिए वो साइक्लिक ऑर्डर
यहाँ डिफरेंस बिटवीन y माइनस y लिख लो ब्रैकेट में, y माइनस y, प्लीज प्लीज प्लीज। हमने लिखा x1 प्लस x2 प्लस x3 ब्रैकेट में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, सिर्फ y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है। साइक्लिक ऑर्डर 1 2 3, 1 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा, ये 1 आ गया तो 2 3, 2 आ गया, 2 के बाद साइक्लिक ऑर्डर देखो 3 के बाद 1, 3 के बाद साइक्लिक ऑर्डर 1 और 2। So that is how you can remember the formula and you will never get confused. और यही है आपकी आज की फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, which triangle? ABC, where coordinates of A are x1 y1, B are x2 y2, and C are x3 y3. So that's the thing, we have derived this formula. Is that clear? Yes, children. We have derived the formula, but where to use? Of course, to find the area of triangle ABC, where A, B, and C, their coordinates are x1 y1, x2 y2, x3 y3 respectively. Can we use somewhere else? Yes. If you can recall, मैंने कहा था शुरुआत में ABCR को ले लिया. Find out area of triangle ABC. And if you get it 0, if area of triangle is ABC 0, मतलब triangle ही नहीं form हुआ. That means those 3 points are on the same line. So, yes, you can use this formula also to show that the 3 points are collinear. If you get area positive, तो वो तीनों point ऐसे ऐसे non-collinear होगा. But if you find their area of triangle formed by these 3 points 0, that means they are on the same line. यहाँ सेम लाइन पे नहीं, पॉजिटिव आया मतलब छोटा सा भी पतला सा भी जो जैसा हो, ट्रायंगल जरूर फॉर्म होगा. एंड इफ ट्रायंगल इज नॉट फॉर्म, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल इज गोइंग टू बी 0. ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म हुआ तो एरिया की क्या बात करें. सो यू कैन यूज the formula to find area of triangle, or let's say area formula, in 2 different situations. One, of course, to find area of triangle. Okay, when the vertices of those triangles fall in Cartesian coordinate plane. And a second, to show that the 3 points are collinear. Is that okay? So next time when we meet, we'll see some sums based on this formula. Alright? So, see you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day.